नमस्कार आपण समस्त को यही भिडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज भिडियो में आपण सहित आरिस्टोटल जहाँकि +3 5th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आरिस्टोटल लाइव थ्योरीज क्रिटिसिज्म नोट्स को शेयर करी। आपन देखिपे यहाँ आम वेबसाइट e-शिक्षा.in रु मुझे नोट्स कहूँ आप चाहिए ऑनलाइन रे e-शिक्षा.in सर्च कले +3 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नोट्स पाइपर। तो चलते कंटिन्यू करवा। यही भिडियो में देखा आरिस्टोटल लाइव थ्योरीज एंड कंक्लूजन जहाँ हम देखा Aristotle life theories, classification of knowledge, theory of four causes, structure of human soul, classification of political system, ideal state and theory of slavery। तो यही सब Aristotle थ्योरी आम ये डिस्कसन करवा। प्रथम आम Aristotle इयरली लाइफ एंड एजुकेशन को डिस्कसन करवा। तो आम जानते Aristotle होउछन कोन गोटे ग्रीक फिलोसोफर पॉलीमैथ माने एमाने जो मानको सबु फील्ड रो नॉलेज से माने रखि थांती। ओके, तो फास्ट हम देखिया बार्थ एंड फैमिली तांकर जन्म और तांकर परिवार। Aristotle वाज बोर्न निकोमाचस, ओके, द कोड फिजिशियन ऑफ किंग ओमियंस ऑफ मेसिडोन। हिज मदर वाज ए पासेटिक्स, ओके। His father connections of the Macedonian court influence of Aristotle future। तो हम देखिले जे Aristotle बापा जने कोन कोर्ट इन्फ्लुएंस Aristotle मेसाडोनिया रो, ओके। आ तांको मां जने फासिस्ट। तांकर एजुकेशन कोन ना एट द एज ऑफ 17 वर्ष बयस रे Aristotle मूव टू एथेंस टू जॉइन प्लाटोस एकेडमी। तो 17 वर्ष बयस कोन करले से प्लाटोंकर एकेडमी को जॉइन करथिले वेयर ही स्टडीड फॉर अबाउट 20 जो कि कोन 20 वर्ष पर्यंत पाठ पढ़थिले। ही वाज ए स्टूडेंट ऑफ प्लाटो, से प्लाटोंकर गोटे स्टूडेंट हला। Although he disagreed with some of Plato theory, he was heavily influenced by his teacher। तो कौन है ना आम जानले जे Aristotle होचंदी प्लाटो को स्टूडेंट, किंतु तथापि प्लाटोंकर किछि थ्योरी थिला, किछि पॉलिटिकल थ्योरीज, ओके, से सब कोन से डिसएग्री थिले आ से कोन किंतु प्लाटो द्वारा से बहुत भाव प्रभावित होइथिले। बर्तमान पढ़िया मिडिल इयर्स। तो मिडिल इयर्स समय कोन थिला ना लिविंग एट एथेंस। से आफ्टर प्लाटो स्टेट प्लाटोंकर मृत्युवरण पर 347 BC, ओके, Aristotle लेफ्ट एथेंस से बाहरी पड़े। ही स्पेंड टाइम इन एशिया माइनर मॉडर्न डे तुर्की रही एंड लेबस वेयर ही कंडक्ट टू बायोलॉजिकल रिसर्च एंड कंटिन्यू हिज फिलोसॉफिकल वर्क ट्यूटरिंग अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो से कौन करथिले ना अलेक्जेंडर द ग्रेट को पाठ पढ़ी ट्यूटर करथिले। इन 343 BC Aristotle invited by the king Philip II of Macedon to tutor his son Alexander। Aristotle tutored Alexander in until 336 BC and this relationship greatly benefited both Aristotle and Alexander। तो Aristotle Alexander को पाठ पढ़ी तो तांकर जो बॉन्डिंग थिला माने पाठ पढ़ा समय रे से रिलेशनशिपटा दी जन मध्य बेनिफिट नहीं थिला उभय Aristotle को आ प्लाटो आउ हमर Alexander को मध्य। लेटर लाइफ कौन होला ना लेटर लाइफ हम देखिले फाउंडिंग द लिसियम। तो कौन कला कौन है ना से लिसियम को फाउंड करते प्रतिष्ठा करते इन 335 BC 335 BC रे Aristotle रिटर्न टू एथेंस एथेंस को फेरी आसिले एंड फाउंड हिज ओन स्कूल। से निजर स्कूल को गठन कले प्रतिष्ठा कले। से स्कूल नाम कौन है द लिसियम, ओके। अनलाइक प्लाटो एकेडमी परी द लिसियम वाज नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव रिसर्च एंड कलेक्शन ऑफ मनुस्क्रिप्ट। तांको रिसर्च करते आ कौन आमर मनुस्क्रिप्ट सब कलेक्शन करते। Aristotle lecture Lyceum covered a wide range of subject and is known for his method of walk around while teaching। His lead the name peripatetic। तो peripatetic वाटा मन रखंतु peripatetic माने कोन ना peripatetic कहले walking हैला walking around while माने बुली बुली हम जो डिस्कशन करिया। नेक्स्ट राइटिंग इन वार तांकर लेखा तांकर से कॉन्सेप्ट तांकर लिखिथिले एथिक्स निकोमाचस एथिक्स पॉलिटिक्स मेथाफिजिक्स पोएटिक्स, ओके, एंड नॉमिनस डिफरेंट साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल ट्रिटीज सब से लिखिथिले। तो नेक्स्ट देखिए कौन एक्सेलेंट। तो कौन है ना अलेक्जेंडर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट 323 BC। तो 323 मसीह अलेक्जेंडर ग्रेट कौन मृत्युवरण करते। एंटी मैसेडोनियन सेंटिमेंट्स इज एथेंस फोर्स Aristotle टू फ्ली टू चार्ल्स ऑन द island ऑफ यूबिया। ही डाइड इन 322 BC एट दी ऑफ 60 इयर्स। तो कौन है से 322 BC 62 वर्ष बयस मृत्युवरण करते। बर्तमान देखिया
ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ, ସେ ନଲେଜକୁ କିପରି କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରିଥିଲେ ଆମ ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ତିନୋଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କରିଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଥିଓରିଟିକାଲ ନଲେଜ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ନଲେଜ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ନଲେଜ ଅଛି ସେ ତିନି ଭାଗ କରିଥିଲେ, ଥିଓରିଟିକାଲ বা ଏପିଷ୍ଟିମି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରୋମିସେସ୍ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ। ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଥିଓରିଟିକାଲ ନଲେଜ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ସେକ୍ aimed at understanding truth about the world। ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ ୱାର୍ଲଡର ଆମେ ଦେଖିବା। ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସଚ୍ ଏଜ୍ ମେଥାଫିଜିକ୍ସ, ଫିଜିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଯେପରି ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନା ମେଥାଫିଜିକ୍ସ, metaphysics, physics and mathematics। practical knowledge କ'ଣ ନା this type of knowledge is concerned with action and ethics, action ଆଉ ethics। it involves knowing how to act virtuously and make good decision। practical wisdom is central to this category। okay, next है productive knowledge। तो productive knowledge କ'ଣ ନା this knowledge is related to production and creation। କିଛି ଆମେ ବନେଇବା, ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ସୃଷ୍ଟି କରିବା। it involves skills and craft such as engineering, medicine, the art। okay, where the goal is produce something useful to or beautiful। नेक्स्ट पढ़िया मोराल एथिकल फिलोसफी। आरिस्टटलଙ୍କର मोराल एथिकल फिलोसफी କ'ଣ ନା ସେ ଦେଇଥିଲେ इज प्राइमरली फाउंड निकोमाचिन। तो यह कौट आसी ना निकोमाचिन एथिक्स आसी एंड यूडोमियन एथिक्स आसी। हिज एथिकल थ्योरी इज ऑफ्टन कॉल्ड वर्च्यू एथिक्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड सेवरल की कॉन्सेप्ट जेपरि कि यूडोनोमिया, जेपरि हैप्पीनेस और फ्लोरिशिंग। तो फॉर आरिस्टटल द अल्टीमेट गोल ऑफ ए ह्यूमन लाइफ इज अचीविंग यूडोमिया बा हैप्पीनेस। आमर प्रकृत लक्ष्य कौन हूँ आमर जे हैप्पीनेस को अचीव करवा। ऑफ्टन ट्रांसफर हैप्पीनेस और फ्लोरिशिंग। यूडोमिनिया इज ए स्टेट और लिविंग वेल एंड फुलफिलिंग वन्स पोटेंशियल। नेक्स्ट देखिए भर्च्यू। तो भर्च्यू कौन ना भर्च्यू आर कैरेक्टर ट्रेड्स दैट इनेबल इंडिविजुअल टू अचीव यूडोमिनिया। माने कौन होची आम जो अचीव करिया आमर जो हैप्पीनेस को। ओके, आरिस्टोटल डिस्कस बिटवीन मोरल भर्च्यू एंड इंटेलेक्चुअल भर्च्यू। मोरल भर्च्यू आर डेवलपिंग थ्रू हैबिटेशन एंड प्रैक्टिस, वेयर इंटेलेक्चुअल भर्च्यू आर डेवलपिंग थ्रू इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग। हम बुझे नेक्स्ट पढ़ा द गोल्डन मीन। गोल्डन मीन कौन ना आरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ द गोल्डन मीन इज सेंट्रल टू हिज भर्च्यू एथिक्स। ही बिलीव्स दैट भर्च्यू लाइज इन फाइंडिंग द बैलेंस बिटवीन डेफिशिएंसी एंड एक्सेस। फॉर एग्जांपल करेज इज द मीन बिटवीन रैशनलनेस एंड क्राउडाइज। नेक्स्ट पढ़िया प्रैक्टिकल विजडम। तो प्रैक्टिकल विजडम कौन ना प्रैक्टिकल विजडम इज द एबिलिटी टू डेलिब्रेट वेल अबाउट व्हाट इज गुड एंड बेनिफिशियल फॉर वन सेल्फ एंड द सोसाइटी। मैंने प्रकृत जो आम आम एबिलिटी डेलिब्रेट करमर निज आ सोसाइटी कौन गुड रर बेनिफिट कौन इट इनवॉल्व्स नॉट ओनली नोइंग व्हाट टू डू बट ऑल्सो हैविंग द मोरल इनसाइट टू एक्ट राइटली। नेक्स्ट है फंक्शन आर्गुमेंट। तो फंक्शन आर्गुमेंट कौन Aristotle argued that everything has a function or ergon and the good for a thing resides in performing its function excellently। For humans this function is rational activity in accordance with the virtue। Next, the role of a community। Aristotle emphasized the importance of community and political life in achieving eudaimonia। Okay, he believed that humans are naturally social beings and that a well ordered polis is essential for individual flourish। Okay, नेक्स्ट पढ़िया आरिस्टोटलଙ୍କର थ्योरी ऑफ फोर कजेस। तो यह कौन ना थ्योरी ऑफ फोर कजेस को नहीं आरिस्टोटल कौन देखिले ना आरिस्टोटल थ्योरी ऑफ फोर कजेस इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन हिज मेथाफिजिक्स एंड फिलोसफी ऑफ नेचर। तो ये कौन ना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट गोटे अकॉर्डिंग टू आरिस्टोटल टू अंडरस्टैंड व्हाई ए थिंग इज द वे इट इज वन मस्ट अंडरस्टैंड इट्स फोर कजेस। जेपरिक मेटेरियल कजेस, फॉर्मल कजेस, एफिशिएंट कजेस एंड फाइनल कज। जेपरि हम देखिए मेटेरियल कज माने कौन द रिच रिफर्स टू सब्सटेंस और मैटर दैट समथिंग इज मेड फ्रॉम। फॉर एग्जांपल मेटेरियल कज ऑफ स्टेट कौन मार्बल और ब्रोंज। ओके, फॉर्मल कज कौन ना दिस इज फॉर्म ऑफ एसेंस ऑफ थिंग व्हिच गिव्स इट इट्स शेप एंड स्ट्रक्चर। इन द केस ऑफ स्टैच्यू द फॉर्मल कज इज द डिजाइन और पैटर्न that shapes the marble or bronze into a practical figure। तो जो डिजाइन कले प्रैक्टिकल फिगर को आनले। ओके, एफिशिएंट कज कौन ना एफिशिएंट कज हम देखा दिस इज द एजेंट और प्रोसेस दैट ब्रिंग्स समथिंग इनटू बीइंग। फॉर द स्टैच्यू द एफिशिएंट कज द स्कल्पचर हु भाव आम कौन मार्बल आसला तापर हम गोटे पत्थर को आम शेप देले तापर हम स्टैच्यू बनइले। ओके, नेक्स्ट फाइनल कज कौन ऑल्सो नोन एज द टेलियोलॉजिकल कज
दिस रिफेस द पर्पज और एंड फॉर व्हिच व्हाट इट थिंग एक्जिस्ट माने कौन गोटे मूर्ति हम स्टाच्यू कले तार मूर्ति कौन हम देखा जब मूर्ति पूजा करवा ना रखा ओके द फाइनल कज ऑफ द स्टैट्यू माइट बी टू बी ब्यूटीफुल ए स्पेस और टू ऑनर ए डिटेल और पर्सन नेक्स्ट टाइम देखा आरिस्टोटल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस तो आरिस्टोटल मतरे हैप्पीनेस अर्थ कौन तो हैप्पीनेस अर्थ से कहते जे फॉर आरिस्टोटल हैप्पीनेस और इडोमिनिया इज द हाईएस्ट गुड एंड द अल्टीमेट एंड दैट ह्यूमन्स एम इन लाइफ माने आम जीवन लक्ष्य है आम लक्ष्य कौन हैप्पीनेस को अचीव करिया इडाइमिनिया is often translated as happiness, but a more accurate translation might be flourishing or well-being. Aristotle's conception of happiness is deeply rooted in its ethical philosophy as outlined in his Nicomachean Ethics. Okay. Here are key aspects of Aristotle's understanding happiness, jeopardy, living in accordance with virtue, activity of soul, the function of argument, the role of external goods, okay, the importance of community, a complete life ये सब रही आप पज कर देखिपारे कि वेबसाइट e-शिक्षा.in आप सर्च कर देखिए आरिस्टोटल e-शिक्षा.in कि आम वेबसाइट +3 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सब नोट्स पाइपर नेक्स्ट पढ़िया आरिस्टोटल इडोमिनिया आम कहले आपला जपरी कौन इडोमिनिया इज सेंट्रल थीम ऑफ हिज इथिकल फिलोसफी गोटे केन्द्र है पार्टिकुलरली इन हिज वर्क निकोमाचेन एथिक्स तो निज नीति मन रखि था इडोमिनिया इज ऑफ्टन ट्रांसलेटेड हैप्पीनेस ओके नेक्स्ट टाइम पढ़िबा आरिस्टोटल इडोमिनिया 3 थिंग्स प्लेजर ऑनर मनी तो यह किपरि ना प्लेजर लाइफ ऑफ प्लेजर दिस इज द परस्यूट ऑफ सेंसरी प्लेजर एंड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन Aristotle notes that many people equate happiness with pleasure and seek a life of enjoyment and physical satisfaction. जब फिजिकल satisfaction होची ओके हाउएवर ही आर्ग्यू करते से आर्ग्यू करते जे दैट दिस इज ए सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस मोर सुटेबल फॉर एनिमल्स दैट देन फॉर ह्यूमन्स बिकॉज इट लैक्स द डीपर फुलफिलमेंट दैट कम्स फॉर एक्सरसाइजिंग रैशनैलिटी एंड वर्च्यू एथले कौन लाइफ को नहीं प्लेजर लाइफ ऑफ प्लेजर और लाइफ ऑफ हॉनर से कौन कहते ना दिस लाइफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय द परस्यूट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड हॉनर फ्रॉम अदर्स people who seek a life honor often engage in political social activities to gain respect and admiration okay while this is a higher pursuit than more mere pleasure Aristotle argued that it is still insufficient for true happiness because it depends on the opinions of other man other man kon opinion diyanti okay depend करछि is not entirely within one's control माने अन्य माने हमको कौन ओपिनियन देवे ये हम हाथ नहीं ओके लाइफ ऑफ वेल्थ सम पीपुल प्लेजर ऑफ लाइफ सेंटर्ड अराउंड एक्वायरिंग मनी एंड मेटेरियल पोजिशन आ किसी लोकंर वेल्थ माने कौन थाए जे आम मनी को एक्वायर करवा प्रचुर परिमाण रे ओके Aristotle viewed that this is as a misguided pursuit because wealth is merely a means to an end, not an end in itself. Money is valuable only insofar as it can be used to obtain others' goods. And therefore it cannot be ultimate goal of life माने मनी आमर अल्टीमेट गोल नुह लाइफ रो नेक्स्ट बढ़िया आरिस्टोटल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सोल ह्यूमन स्ट्रक्चर किपरि जेपरि कि से कहले जे आरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सोल इज सेंट्रल हिज फिलोसफी पार्टिकुलर हिज वर्क डी एनिमिया और ऑन द सोल एंड निकोमाचेन एथिक्स ही व्यूज द सोल और द एसेंस ऑफ फॉर्म ऑफ ए लिविंग बीइंग व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर हिज लाइफ ऑफ इट्स लाइफ फंक्शन Aristotle structure of human souls is divided into 3 main part. जपरि देखिए कौन फास्ट होची न्यूट्रिटिव सेंसिटिव और रेशनल तो न्यूट्रिटिव से कौन कहले ना न्यूट्रिटिव और वेजिटेटिव सोल तो दिस इज द बेसिक लेवल ऑफ सोल सोल रा बेसिक लेवल and is responsible for most fundamental life process such as nutrition, growth and reproduction. It is present in all living things including plant, animal and humans. आमे जिबा एथरे ओके the nutritive soul ensure that the organism can take in nourishment, grow and reproduce to maintain its species. आम कौन कर ग्रो होती रिप्रोड्यूस कर स्पेसीज को मेंटेन करने ओके वंश विस्तार कर नेक्स्ट बढ़िया सेंसिटिव और एनिमल सोल तो दिस लेवल ऑफ सोल इंक्लूड्स द कैपेसिटीज ऑफ सेंसेशन परसेप्शन मूवमेंट एंड डिजायर इट प्रेजेंस इन एनिमल एंड ह्यूमन्स बट नॉट इन प्लांट तो तापर कौन होना ए जो अच्छी आम डिजायर इच्छा अच्छी मूवमेंट अच्छी किंतु एनिमल प्लांट ता न थाए ओके दिस सेंसिटिव सोल अलाउज organism to perceive their environment through senses, respond
and stimuli and have desire to motivate their action. It also includes the capacity of our locomotion and other movement. Next time पढ़िया rational human soul. तो यह कौन ना this is highest level of the soul is unique to humans. It encompasses the capacity of reason, thought and intellectual activity. The rational soul is divided into two part कौन theoretical intellectual and practical intellectual. तो theoretical intellectual this part of rational soul is concerned with the pursuit of knowledge and truth for its own sake. It involves contemplation and understanding of the fundamental principle and the internal truth. जो आम theoretical practical intellectual कौन पढ़िया ना this is the part deals with the practical reasoning and decision making. It is concerned with the ethical and moral action. এটা কোন না practical টা আমরা ethical and moral action guiding individual to live virtuously and make choices. Okay. नेक्स्ट पढ़िया मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस आगे हम देखिले अल्टीमेट गोल. ओके सब तार कनसेप्ट गुड़िक मीनिंग ऑफ भर्च्यू मध्य हम देखा जे आरिस्टोटल कनसेप्ट ऑफ भर्च्यू इज सेंट्रल एलिमेंट हम देखिले. तो ये हम कौन हेरार्की आसेप्ट जब देखिए डेफिनेशन भर्च्यू. तो भर्च्यू इज ए ट्रेड और क्वालिटी दैट एनहांस और इंडिविजुअल फंक्शन टू वेल एंड लिव ए गुड लाइफ. आम गोटे भल जीवन बंचा भर्च्यू. ओके इट इज डिस्पोजिशन टू बिहेव इन द राइट मैनर एंड सच ए मैनर बिटवीन एक्सट्रीम्स ऑफ deficiency and excess, which he calls the golden mean. नेक्स्ट पढ़िया आरिस्टोटल कर आइडियल स्टेट को नहीं कौन मत थिला. तो आरिस्टोटल कर द विजन ऑफ आइडियल स्टेट इज कम्प्रिहेंसिवली आउटलाइन इन हिज वर्क पॉलिटिक्स. तो पॉलिटिक्स आसी ही बिलीव्स दैट द स्टेट एक्जिस्ट टू प्रमोट द गुड लाइफ फॉर इट्स सिटीजन एंड अचीव द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन फ्लोरिशिंग और यूडोमिनिया. हाउ द की कॉन्सेप्ट ऑफ आरिस्टोटल आरिस्टोटल आइडियल स्टेट को नहीं किसी की कॉन्सेप्ट देखा जब पर्पज ऑफ स्टेट गोटे स्टेट पर्पज कौन उद्देश्य कौन. आरिस्टोटल व्यू दैट द स्टेट एज ए नेचुरल एंटिटी दैट एराइज फ्रॉम द बेसिक ह्यूमन नीड टू लिव ए कम्युनिटी. आम गोटे कम्युनिटी रोचन तो स्टेट मत रहा. ओके पर्पज स्टेट उद्देश्य था द अल्टीमेट पर्पज ऑफ द स्टेट इज टू प्रमोट द गुड लाइफ एंड भर्च्यू एमंग द इट्स सिटीजन एलोंग देम टू अचीव यूडोमिनिया. आगे स्टेट्र कर्तव्य कौन जे जो रही लोक मानू सिटीजन मानू गोटे भल जीवन दब तर वेलफेयर वेलबिंग काम कर हैप्पीनेस अचीव कर हेल्प कर. नेक्स्ट पढ़िया सिटीजनशिप एंड पार्टिसिपेशन. In Aristotle ideal state, citizens are those who actively participate in the political life of the community. माने हमर जो राजनीतिक एक्टिविटी में भाग नेबा. The participation of is essential for achieving virtue and good life. Citizenship is not just a status but an active role involving duties and responsibility in the governance. Mixed constitution. The Aristotle advocate for mixed constitution that to combine elements of monarchy. Okay. आरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी. तो से कहते ना गोटे मिश्रित संविधान बनवा जो कि मोनार्ची किसी फीचर थी आरिस्टोक्रेसी किसी फीचर थी आउ डेमोक्रेसी किसी फीचर्स थी. ही बिलीव्ड इट्स कॉम्बिनेशन हेल्प टू बैलेंस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ईच गवर्नमेंट इंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंटिंग और करप्शन. तो कौन हम जहाँद्वारा आमको गोटे स्टेबल गवर्नमेंट करप्शन को रखिपार दुर्नीति को है. द बेस्ट कन्स्टिट्यूशन इज दैट इनकॉर्पोरेट्स द विजडम ऑफ द फ्यू द क्वालिटी अथॉरिटी ऑफ द वन एंड पार्टीशन ऑफ द मेनी. ओके जपरिक आम क्वालिटी देखिए जपरि कौन विजडम ऑफ द फ्यू आरिस्टोक्रेसी किसी कम लोक जानी था. द अथॉरिटी ऑफ द वन मोनार्ची जो था सरकार आम अथॉरिटी आ पार्टीशन ऑफ मेनी माने गुड़ाए समस्ते कौन भागयोग करती. रूल ऑफ लॉ. तो रूल ऑफ लॉ से कौन कहले ना आरिस्टोटल एम्फासाइज द इंपोर्टेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ. Law should be designed to promote the common good and be applied consistently to all citizens. समस्त को अप्लाई हो से कौन से पोस्ट था ना कहीं. The rule of law helps to prevent the arbitrary use of power and ensure justice. Virtue and education. Education is a crucial ideal state. The state should provide an education that cultivates virtue and prepares citizens for their role in political life. तो एजुकेशन कले लोक जापर भूमिका कौन अच्छी स्टेट रे. ओके पॉलिटिकल एक्टिविटी. This education should be public and aimed at developing both moral and intellectual virtue. Next, middle class. The Aristotle believed that a strong and large middle class is essential for the stability and success of the state. The middle class act as a moderating force between the rich and the poor, reducing the likelihood of faction conflict and promoting social harmony. Next, in short, economic structure. The in Aristotle ideal state,
इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुड सपोर्ट द गुड लाइफ रेदर देन डोमिनेट इट माने कौन से कहते हैं इकोनॉमिक आम गोटे भल बना जो एमती सिस्टम बनैनी जो थी कि गोटे क्लास थी सी अन्य क्लास को डोमिनेट करो ओके ही क्रिटिसाइज एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड एम्फासाइज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड बी सबऑर्डिनेट टू द गोल ऑफ achieving eudaimonia. The economy should provide the necessary resources for citizens to live virtuous life without encouraging greed or inequality. Role of women in slaves कौन ना while Aristotle's view on women and slaves reflect the norms of his lifetime, they are seen or problematic today. He considered of women to have a role in the household but not in the public life and believed that some people were naturally slaves. Okay, these views are inconsistent with the contemporary understanding of equality and human right. तो रोल वुमेन मान को एरिस्टोटल को यही प्रकार भावना थिला. नेक्स्ट बढ़िया जस्टिस एंड इनइक्वालिटी. तो एरिस्टोटल डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एंड करेक्टिव जस्टिस. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इन्वॉल्व्स द fair allocation of resources based on the merit and contribution for common good. जोटे कौन हम ना डिस्ट्रीब्यूट हम कि बंटन आउ नेक्स्ट करेक्टिव जस्टिस डील्स विथ रेक्टिफाइंग रॉन्ग्स एंड इंश्योरिंग फेयर ट्रांसैक्शन. इक्वालिटी फॉर एरिस्टोटल इज प्रोपोर्शनल एंड बेस्ड ऑन द मेरिट रेदर देन एब्सोल्यूट इक्वालिटी. से कौन ना मेरिट अनुसार इक्वालिटी देवा. ओके नेक्स्ट हम देखिए इन कंक्लूजन और समरी. नेक्स्ट थ्योरी ऑफ स्लेवरी. तो एरिस्टोटल मैंने थ्योरी ऑफ स्लेवरी कौन कहते ना एरिस्टोटल थ्योरी ऑन स्लेवरी इज ए कंट्रोवर्शियल आस्पेक्ट ऑफ फिलोसफी primarily outline his work of politics. He attempts to provide a justification for the extent of slavery which reflect the norms and practice of his time. Here are the main point of Aristotle theory of slavery. तो slavery के main points of natural slavery, mutual benefits, conventional slavery, criticism context slavery in household, moral and intellectual development. ओके तो ये सब criticism रही Aristotle slavery आप पॉज कर पढ़ी पारे. तो समरी आम देखिए जब कह बुझे स्लेवरी कौन एरिस्टोटल हिसाब से. इन समरी Aristotle's theory on slavery is based on the idea of natural differences among people, where some are naturally suited to be self due to the lack of rational capacity. माने कौन कहते हैं ना स्लेवरी जो मैंने rational capacity नथिबो. ओके ही view the master slave relationship as mutual beneficial and integral the functioning of the household and state. आउ कौन अछि ना मास्टर स्लेव जो रिलेशनशिप अछि सेटा कौन अछि अजे म्यूचुअल बेनिफिशियल कहाँ ना उभय हाउस होल्ड और स्टेट बोथ. ओके फंक्शन ऑफ द हाउस होल्ड एंड स्टेट. वाइल हिज व्यूज रिफ्लेक्ट ऑन द नॉर्म्स ऑफ टाइम दे आर एथिकली प्रॉब्लमैटिक एंड हैव बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड फॉर जस्टिफाइंग और इनहेरेंटली अनजस्टिस इंस्टीट्यूशंस. ओके तो ये एरिस्टोटल को आम डिस्कसन कले आम देखिले जे एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, लाइफ स्केचेस. ओके एरिस्टोटल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सोल, 4 कॉजेस, आइडियल स्टेट, थ्योरी ऑफ स्लेवरी ये सब हम डिस्कसन कले. जो मैंने कि नोट्स चाहते मुझे आम टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी यार नोट्स को अपलोड करदेवी देखिए आपण मैंने जाकि नोट्स टी पाइपर आप वेबसाइट नोट्स टी को देखिपारे लिखिपारे और प्रिंट आउट करेंगे. थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो. यही वेबसाइट आपण मान कौन +3 समस्त नोट्स अच्छी आप चाहिए सर्च करें.